Hello everyone. Today we are going to discuss about numerical problems of class 9 science chapter 9, that is forces and laws of motion. See the page number 127. Question number 4. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second. Let's suppose this is our first object and this is our second object. ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इस लाइन पर, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं एक ही लाइन पर, दैट इज सेम लाइन, गॉट इट। एक ही लाइन पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। सी हियर, फर्स्ट दोनों ऑब्जेक्ट का मास गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है। दोनों ऑब्जेक्ट का मास गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, गॉट इट। फिर क्या हुआ, सी हियर, दे कोलाइड, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या किया, टकराया, एक दूसरे से टकराया, ठीक है। एंड आफ्टर द कलिशन क्या हुआ, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर कलिशन के बाद क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आया 1.67 मीटर पर सेकंड, गॉट इट। And determine the velocity of the second object. We have to find the velocity of second object. हमें क्या find करना है, second object का velocity find करना है, second object का velocity find करना है, got it। We have to find the velocity of the second object, got it। तो ये वेलोसिटी है बिफोर कलिशन, ये दोनों वेलोसिटी है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। ये बिफोर कलिशन का है, बिफोर कलिशन का है। और ये आफ्टर कलिशन, कलिशन के बाद ये वेलोसिटी आया, ठीक है। आफ्टर कलिशन के बाद ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आया एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, गॉट इट। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर first object side and this is our second object side, got it। So what is given, two object of masses 100 gram and 200 gram. Let's take m1 is equal to 100 gram and m2 is equal to 200 gram, and what is given, and velocity is given, got it, velocity is given. Let's take u1 is equal to 2 meter per second and u2 is equal to 1 meter per second, got it। This because why we have taken u1 and u2, because this is before collision, ये दोनों velocity है before collision, that's why we have taken u1 and u2, got it। And what is given, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Let's take b1 is equal to 1.67 meter per second, and we have to find the velocity of the second object, that is b2 is equal to question mark, correct। If mass and velocity is given, then we can apply here law of conservation of momentum, got it। If mass and velocity is given, then we can apply here law of conservation of momentum, because momentum is equal to mass into velocity, because momentum is equal to what, mass into velocity, got it। So by law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 b1 plus m2 b2, got it। What is our m1,
m1 is equal to 100 gram. See here, this is in gram, this is also in gram. And what is the S is the SI unit of momentum, because SI unit of momentum is kg meter per second. Kg meter per second, correct? This is the SI unit of momentum. So now we have to convert it in kg and also we have to convert it in kg. तो हमें कन्वर्ट करने के लिए ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 इज कैंसिल, 0 0 इज कैंसिल। जब हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा 0.1 kg। सेम इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। जब हम 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा 0.2 kg, got it? So see here, what is our m1? m1 is equal to 0.1 into what is our e1? e1 is equal to 2 plus what is our m2? m2 is equal to 0.2. What is our u2? u2 is equal to 1. What is our m1? m1 is equal to 0.1 into what is our b1? b1 is equal to 1.67 plus what is our m2? m2 is equal to 0.2. What is our b2? b2 is equal to question mark, that is b2. Got it? Now see here, 0.1 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0.2 प्लस 0.2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इज इक्वल टू 0.1 के साथ 1.67 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0.167 प्लस 0.2 b2, got it? 0.2 plus 0.2, that is 0.4, and it will be what, 0.167 plus 0.2 b2, got it? 0.4 minus 0.167 is equal to 0.2 b2। अब हमें क्या करना है, 0.4 से 0.167 को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। हम कैसे करेंगे, सी हियर 0.4, यहाँ पर सी डिसिमल के बाद कितने घर है, 3 घर है, एंड तो हमने क्या किया, हमने इसको भी सेम एज इट इज उसके जैसा बना दिया, ठीक है? तो 0.167 डेसिमल के बाद 3 घर है तो हमने इसको भी डेसिमल के बाद 3 घर बना दिया, ठीक है? तो 10 से 7 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 9 से 6 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, एंड 3 से 1 जाएगा तो 2, तो इट विल बी 0.233, कट 0.233, तो इट विल बी 0.233 is equal to 0.2 b2, implies b2 is equal to 0.233 divided by 0.2, करेक्ट? डेसिमल के बाद कितने करे, 3 करे, तो हमने यहाँ पर क्या दिया, 1000, ठीक है? और यहाँ पर सी हियर डेसिमल के बाद कितने घर है, 1 घर है, तो हमने यहाँ पर 10 दिया। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 घर है इसलिए हमने न्यूमरेटर पर 10 दिया। न्यूमरेटर पर डेसिमल के बाद 3 घर है इसलिए हमने डिनोमिनेटर पर 1000 दिया। अब क्यों दिया, बिकॉज हमें क्या करना है, डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाने के लिए ये सब किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 233, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1.165 मीटर पर सेकेंड, 1.165 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? After simplification, we will get 1.165 meter per second. Got it?
So this is our solution. This is the velocity of the second object. Got it? This is the velocity of the second object. V2 is equal to 1.165 meter per second. Got it? Thank you.